सो हेलो गाइस, वेलकम टू javaisawesome। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप कन्वर्जन के बारे में। जब भी आपको वर्ड सुनने को मिले कि लाइक व्हाट इज टाइप कन्वर्जन, सो वेन एवर यू सी लाइक टाइप कन्वर्जन, देन दैट टाइम ओनली यू हैव टू थिंक अबाउट ओके, कन्वर्जन मीन्स casting or promotion. Okay, so somebody people like sometimes some people are the confused like okay, what is the conversion, what is the casting, what is the promotions. So there is no difference between them. Okay, all are same. So whenever you talk about the conversion, casting or promotion, those all are the same only. So if you see the definition, like what is the type conversion, in Java, the process of converting a value of one data type to another data type. So whenever like maybe the interviewer or somebody else, if they are asking like what is the type conversion, what is the type casting, what is the type promotion, then you have to say only one thing: the process of converting a value of one data type to another data type. So if you are converting one data type to another data type means what? So basically, for example, you have some data into the int a equal to 10, and you want to convert those int value into the float value. So you can say you are converting one value which is int to the float, that is called one data type to another data type. So that is things is a type conversion, type casting or type promotion. Okay, so simply say to the converting a one data type to the another data type, that is called a type conversion or type casting. Okay, next, Java supports two types of the type conversion, which is implicit type conversion and explicit type conversion. So what is the implicit and what is the explicit? Any difference between them? So implicit means the conversion which is possible without losing a data, or explicit means the conversion which is possible with forcefully even data will be lost. Okay, so if you say in the simple term what is the implicit type casting and what is the explicit type casting, so simply you can say it like the implicit type casting is when you convert a small data type. A small data type means what? You have some sort type of the value. Sort means something byte or sort, those data type of the value, and you are converting it to the larger data type value, which is float, which is int, which is long, which is double. So those are the long data type value. So converting a small data type to the long data type, that is called implicit type casting. For example, you have a one glass and you have a one bucket. Okay, so you have a one glass, you have a one bucket. In glass having a sum of the water, and you want to convert this water, glass of the water, into the bucket of water. Okay, if you want to glass some glass of the water into the bucket of water, so जब भी आप ग्लास में जो पानी रखे हो, वाटर रखे हो, उसको जब आप डालोगे किसी बकेट में, बड़े बकेट में, तो क्या होगा? आसानी से आप उठा करके उसे उसमें डाल दोगे, कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं होगा, और कोई भी आपका डेटा लॉस नहीं होगा, कोई भी आपका पानी का नुकसान नहीं होगा। जितना पानी आप ग्लास में रखे हो उतना पानी आसानी से आप डाल सकते हो उस बकेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में अगर आप करते हो कन्वर्ट, तो कोई डेटा लॉस नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इजीली आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। So here you can see the conversion is done automatically by the compiler. This is called the implicit type casting or winding. For example, converting a int to the double or char to a int, that is called implicit type casting. What is the explicit type casting? So when you talk about the explicit type casting, when you convert a larger data type to the smaller data type, it means you have a one bucket of water and you want to store those bucket of water in one of the small glass. Okay, so if you put bucket of the water into the small glass, what will happen? Like whatever the capacity of the glass you have, that much data will be stored in the glass, and apart from this, whatever the like water you have, those are will going to the like wastage, those are waste, those are loss.
you can say loss. So those data will be lost, those water will be lost. Okay, so जो भी आप डेटा, जो भी आप बकेट से पानी जब उसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो सारे मतलब कि जितना ग्लास का कैपेसिटी है उतना तो स्टोर कर लेगा, उसके अलावा जो भी आप डालोगे सब गिर जाएगा। जब सब गिर जाएगा, पूरे वाटर जब गिर जाएंगे नीचे, तो उसका कोई यूज है, कोई यूज नहीं है। ओके, सो उसको बोलते हैं लॉसिंग ऑफ द डेटा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेक्निकली टर्म में बोलें, सो आपके पास एक इंट डेटा है और नहीं एक फ्लोट डेटा है जिसका कैपेसिटी है 1 2 3 4 5 6.462356 समथिंग। सो एक बहुत बड़ा डेटा है और इस डेटा को अगर आप डालना चाहते हो बाइट में, जो कि बाइट का कैपेसिटी है 127 मैक्सिमम माइनस 127 टू। ओके, सो इसका जो कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी में अगर आप डालते हो वैल्यू को, उतने बड़े वैल्यू को 1000 समथिंग, ओके, सो दोज डेटा विल नॉट एबल टू स्टोर द बाइट, बिकॉज फ्लोट डेटा आप डाल रहे हो कहाँ पे, इंटीजर टाइप में, विच इज़ बाइट। सो बाइट के पास उतना कैपेसिटी नहीं है। बाइट क्या है, ग्लास है, और फ्लोट क्या है, एक बकेट है। सो बकेट का जो डेटा है अगर आप ग्लास में डालोगे, उसी तरह से फ्लोट का डेटा अगर आप इंट में डालोगे तो क्या हो जाएगा, लॉस होगा, समथिंग इज लॉस। सो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। सो व्हेन यू कन्वर्ट ए लार्ज डेटा टाइप टू द स्मॉल डेटा टाइप, द कन्वर्जन मस्ट बी डन द एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है फोर्सफुली बाय द प्रोग्रामर। दिस इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग और नैरोइंग। फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्टिंग ए डबल टू द इंट और लॉन्ग टू ए बाइट, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, सो व्हाट इज द आउटपुट। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ द सम कास्टिंग। सो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंट x इक्वल टू 10, you have a one variable called int x equal to 10, long y equal to x. So this is the integer type and this is the long type, this is the glass and this is the bucket. So easily you can store the x value into the y. So that is called implicit typecasting. There is no data loss here. Okay, if we talk about the long, so this is the long, it's a big data type and you are converting this value into the integer. So what is the size of the integer? It's a small compare of the long. So what will happen, you are casting those value like long data, this is the long, a is long here, and here you are casting those value long into the integer value with the parenthesis, that is called explicit typecasting. So जब भी आप implicit typecasting करोगे कन्वर्जन, आप इजीली कर लोगे, y इक्वल टू एक्स असाइन कर दोगे। लेकिन अगर आप एक्सप्लिसिट करोगे तो डेफिनेटली आपको पैरेंथेसिस में जिस टाइप में आपको कन्वर्ट करना है उस टाइप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये जो लॉन्ग है ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इंट में और स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, बी में। तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। If you see here float c equal to 3.14, which is floating value. If you want to store this floating value into the int, what will happen? You are doing the explicit type conversion, because float is a bucket and you are trying to store this bucket value into the integer, which is glass. Okay, so c is something which is float and we are trying to convert it to the int. So what will happen, it is the explicit type conversion. By the way, please comment or give the discussions of your output, like what is the output of this one. Okay, when you convert 3.14 value into the integer, so what will output will be generated. Okay, next, what is the output? So here this is the class test public static void main string args. Try this code in your local and please comment the output. Okay, this is the explicit typecasting, and please comment the output in the discussion, and in the below you can see the discussion where you can type your output and also explain like why this is the output. Okay, so this is the things you have to know about. This is the casting, and please just remember two things, like what is the typecasting, what is the type conversion, and what is the promotion. All are same.
And converting a one data type to another data type, that is called conversion or casting or promotion. There are two types of the casting or conversion, which is implicit type casting or explicit type casting. That's it. And just take some example, which is converting a small data type to the larger data type or larger data type to a small data type. That's it. थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वी कैन डिस्कस सम मोर टॉपिक्स. थैंक यू सो मच.